Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today we are going to study about post-colonialism. We will be talking about what is the meaning of post-colonialism, what are the major terms about it, and who are the major theorists about this theory of language, post-colonialism, actually, this era of literature. So everybody please open the pictures I've sent you in the group. First of all, go to slide number 2. We have here the slide number 2, beta. We have the definition of post-colonialism. If you see this one, post-colonialism definition. Post-colonialism or post-colonialism with dash and without dash is the outlook and studies. ये एक नुक्ता नज़र है और मताला है as responses to the colonial subjugation of European or Western to third and fourth worlds that emerges in the 70s. कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म बेटा वो स्टडी है जिसमें हम उस नुक्ता नज़र और उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि जो मगरब वालों ने या यूरोप वालों ने जब पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया, मुख्तलिफ ममालिक को अपनी कॉलोनीज बनाया, तो फिर उनके जाने के बाद वहाँ उनके क्या असरात बाकी रह गए. पोस्ट मीन्स बाद में, कॉलोनियलिज्म आबादकारी निज़ाम के बाद. इसके लिए तो उनके जाने के बाद बेटा क्या मामलात उधर बाकी रह गए. दे आर ऑल पार्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. सेम इज द केस इन आवर कंट्री आल्सो. वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन from the Britishes. It's 1935 constitution that is still in one way, in one form or the other, is being used in our country. And also we have so many buildings in our country, like the buildings of the governor's houses. ये सारी की सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी पोस्ट कॉलोनियल जो है ना, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर एक हिस्सा है. कॉलोनियलिज्म की जो है ये बाकियात हैं जो बची हुई हैं. इसके लिए so in post-colonialism, actually, we study the effects of their policies and on different aspects of our life, on social, cultural, political, religious, और ये सारे के सारे मुख्तलिफ एरियाज में हम उसका असर देखते हैं. However, ताहम it's not only talking about the Western colonial subjugation. ये ना सिर्फ मगरब की जो उन्होंने subjugate किया और महकूम बनाया मुख्तलिफ जो है वो इलाकों को, बट आल्सो वेरियस रियलिटी ऑफ इनजस्टिस. बल्कि इसमें मुख्तलिफ हकायक को भी हम देखते हैं जिसमें नाइंसाफ़ी की गई. कल्चर एंड जेंडर डोमिनेशन, जिसमें एक कल्चर को दूसरे कल्चर के ऊपर डोमिनेट करवाया गया. एंड जेंडर डोमिनेशन, और किस तरह जो है वो जेंडर बेस पे जो है वो मामलात चले. जो मेल्स थे वो डोमिनेंट थे इन सोसाइटी ऑन फीमेल्स. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखते. सेक्सुअल ओरिएंटेशन इश्यूज में, यानी जिन्स से मतलब कोई मेल है तो उसको और तरह ट्रीट किया गया, फीमेल्स है तो उनको और तरह ट्रीट किया गया. सोशल क्लासेस, समाजी तबकात का क्या कॉन्सेप्ट आया हमारे पास. एंड सबऑल्टर्न पीपल एक्सपीरियंसेस एटसेट्रा. और फिर जो बदले हुए लोग थे, सबऑल्टर्न मीन्स बदले हुए, जो पहले कुछ और थे बट व्हेन दे वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न पीपल एंड द यूरोपियंस, तो फिर उनकी जो सोचने का अंदाज है हर चीज़ बदल गई. उनके क्या तजर्बात थे बेटा ज़िंदगी के. ऑल दैट स्टफ इज बीइंग स्टडीड इन पोस्ट कॉलोनियलिज्म. इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड. सॉरी, पोस्ट कॉलोनियल मेन कॉन्सेप्ट्स. दिस इज एक्चुअली द हेडिंग. इसमें मेन चीज़ें हम कौन सी स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना. The copying of the colonizing cultures. आबादकार जो लोग थे, जो है वो जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, उनकी सकाफत को कॉपी करना, बिहेवियर उनके रवैयों को, एंड वैल्यूज और उनकी इकदार को. बाय द colonized contains both mockery and certain menace.
वो लोग कॉपी करते थे जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था। और इसमें दोनों चीज़ें शामिल थी, मौकरी भी थी, बाद का चीज़ें बड़ी जो है वो मजाक की तरफ चली जाती, सही तरह कॉपी नहीं होता, जैसे कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। और बाद औक़ात इससे नुकसान भी होता था। देर was a division between the people who were westernized and the people who were non westernized। ये एक किस्म का जो है वो फ़र्क मुआशरे में पैदा हो जाता था। So that ताकि मिमिक्री इज एट वंस रिजेम्बलेंस एंड menace। लिहाजा ये जो एक नकल थी, ये एक ही वक्त में ये किसी से मुशाबियत थी और किसी दूसरे कल्चर या लोगों के लिए एक किस्म का नुकसान था, उनके लिए एक यानी खतरा था इससे। बिकॉज द एक्चुअल कल्चर और द नेटिव कल्चर्स, they would lose actually their place and their strength when the people are following the culture of the colonizers। तो ये दोनों चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बेटा उसमें ये जिसने लिखा है, ये बाबा 1994, होमी के बाबा, ये एक बहुत बड़ा थियोरिस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसने ये लिखा हुआ है कि ये जो मिमिक्री थी, इट हैड एक्चुअली बोथ द डायमेंशंस, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। Here we go to the next one. This is the first concept about mimicry that we study in postcolonialism. From the theory of Homi ke Baba, mimicry is a concept of imitating colonizers' behavior। मिमिक्री का मतलब है कि हम colonizers के रवैयों को इख्तियार करें। intended to mock which can appear as a parody in the literature। इस तरह हमने इख्तियार किया कि जो यानी जो असल थी वो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे, लिहाजा लिटरेचर के अंदर जो है वो एक पैरोडी का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, यानी जो असल है हम उससे दूर चले गए। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी जिसमें ये सारे के सारे काम किए गए ताकि लोगों को उन रवैयों के, उन चीज़ों के बारे में एक पैरोडी के जरिए बताया जाए कि वो चीज़ें ठीक नहीं है। इन लिटरेचर में दैट प्रोड्यूसिंग सोशल पॉलिटिकल वर्क्स, जिसने जो है वो समाजी और सियासी काम किए ताकि लोगों को एक पैरोडी के जरिए जो कॉलोनाइजर्स थे उनके कल्चर, उनकी सकाफत के बारे में बताया जाए कि वो ठीक नहीं। इस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ओके। मिमिक्री इज अ सिवियर क्रिटिसिज्म एज एन इम्प्लीमेंट टू रेजिस्ट कॉलोनाइजेशन। ये एक किस्म की एक मज़ाहमत थी मिमिक्री जो थी, कि उनकी वैल्यूज़ को हम अडॉप्ट करके इस तरह पेश करें कि लोग जो है उनका फ़न करें, उनसे उनका मजाक उड़ाएं और उनको फॉलो ना करें। इस क्लियर? The most radical anti-colonial writers often called the mimic men, यानी जो बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाले कॉलोनियलिज्म के ऊपर जो था उनको मिमिक मैन भी कहते हैं, कि मजाक करने वाले आदमी। यानी वो क्या करते थे, जो कल्चर और सकाफत मगरब वाले लेके आए थे उसका मजा और उसका फन करते थे उसके ऊपर, ताकि लोग उसको फॉलो ना करें। इस क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा मिमिक्री इन पोस्ट कॉलोनियलिज्म इरा। ये मिमिक्री का कॉन्सेप्ट है। और होमी के बाबा जो है, ही इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर प्रोपोनेंट और द मेजर theorist who introduced this term mimicry। Is clear to everybody? Here we go to the next one. Hybridity is another term that is used in post-colonialism. The fusion of the two traditions to which create new trans-cultural elements and produce a double identity that contradicted as a colonizer and colonized at the same time। कहते हैं कि बेटा जब ब्रिटिश वाले हमारे पास आए, जब उन्होंने हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा किया, तो फिर क्या हुआ कि लोगों के अंदर उनके कल्चर के बारे में आगाही आनी शुरू होगी, लोग उनके कल्चर को फॉलो करना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक दोहरापन आ गया, हाइब्रिडिटी, दोहरापन। तो लोगों को कुछ उन्होंने अपने कल्चर को अडॉप्ट किया और कुछ उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, लेकिन वो ना अपने कल्चर में फिट हो पाए ना उनके कल्चर में फिट हो पाए। सादा सी मिसाल के कौवा चला जो हंस की चाय अपनी चाय भी भूल गया, ना वो उधर के रहे ना वो उधर के रहे। तो ये है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडिटी, दोहरापन। तो ना वो फिर कॉलोनाइज्ड में रहे और ना ही वो फिर कॉलोनाइजर्स में रहे। इट्स क्लियर बेटा टू एवरीबॉडी? लाइक वी स्टडी इन लास्ट टाइम अबाउट one of the policeman actually in the last story that we were studying. The policeman, he was half white, half black. So he was neither fitting in the blacks nor fitting in the whites. So this is actually the case here. So एक दोहरापन बेटा लोगों के अंदर आ गया। In literature, it causes ambivalence and confusing whether it is opposing or supporting colonialism।
ये जो एक दोहरापन आ गया लोगों के अंदर और फिर तहरीरों के अंदर भी, तो इससे लोग कंफ्यूज हुए पढ़ने वाले कि क्या ये जो चीज़ें हैं इससे कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है या कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में जाया जा रहा है। Because for whatever post colonial text is supposed to uncontaminated by the colonialist concepts। कहते हैं कि जो भी वजह है, लेकिन एट द एंड बात यही है कि जो भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आया है हमारे इलाकों में ब्रिटिश वालों के जाने के बाद, तो वो उसके ऊपर एक असर उनका आया लाजमी। एक जो उनकी छाप है, जो कॉलोनाइजर्स थे, जो ब्रिटिश वाले थे, उनका एक असर आया अफ्रीका या अमेरिका के अगर बात करें तो उधर जो यूरोपियन लोग थे अमेरिका की आज़ादी से पहले, यानी तो उनका एक असर उनके कल्चर का मौजूद है जितना भी लिटरेचर लिखा गया। That is why we have this separate genre of study that is called postcolonialism or postcolonialism theories, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह जो ये कॉलोनाइज्ड इरा था, इसके अंदर होने वाले हालात और वाक़यात ने बाद में आने वाले सारे अदब को, सारे लिटरेचर को इफेक्ट किया। क्लियर बेटा टू एवरीबॉडी? Here we go to the next one। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था, इसके लिए यहाँ तक ही बहुत है। थर्ड वन, ओरिएंटलिज्म, अनदर कॉन्सेप्ट। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है मशरकी अकदार या मशरक से मुतल्लक। तो दिस वाज अ नेम नॉर्मली यूज्ड बाय पीपल रिफरिंग टू अस इन द वेस्ट। वेस्ट वाले जो है वो हमारे बारे में बात करने के लिए वर्ड यूज करते थे ओरिएंटलिस्ट। जब हम जैसे बात करने के लिए वर्ड यूज करते हैं वेस्टर्नर्स, so they used to say Easterners are Orientalists. So the concept of Orientalism came into existence. इसको देखते हैं बेटा। Orientalism is rather than expresses a certain will or intention to understand, in some cases of control, manipulation, even incorporate what is manifestly different world। एडवर्ड सर ने बेटा 1978 में बोला था कि ये जो वर्ड है ये किसी हद तक जो कॉलोनाइजर्स ने बाकी दुनिया को कॉलोनाइज किया, उनके बारे में मुख्तलिफ जो है वो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको नुकसान पहुँचाया, उनके वसाइल को, उनके सकाफत को, उनके कल्चर को, ये वर्ड जो है ना उसकी तरफ एक रेफर करता है। जैसे हम लोग आज के दौर में एक वर्ड इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी। दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी मीन्स मोस्टली द पीपल फ्रॉम द यूरोपियन और वेस्टर्न साइड। और हम ये यूरोपियन या वेस्टर्न का वर्ड यूज़ करते हैं इसीलिए सो दैट कि हम उनको रेफर करें। जब उनको रेफर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गिविंग अ डिफरेंट आउटलुक, दैट दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन लाइफस्टाइल, देयर ओन वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग एंड वर्किंग एटसेट्रा। सेम इज द केस विद दिस वर्ड व्हेन दे टॉक अबाउट ओरिएंटलिज्म और ओरिएंटलिस्ट are the people who are living in Eastern or Easterners, they talk about a different sort of world or different kind of people. That's why these words actually came into existence. Is clear बेटा? ओरिएंटलिज्म को देखते हैं इन एडवर्ड सैड्स बुक। अब एडवर्ड सैड ने जो लफ्ज़ यूज़ किया है दैट वाज ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज्म, ये उसने वर्ड यूज़ किया इन इस बुक। उसकी बुक में ओरिएंटलिज्म, it is clear that Orientalism is the project of European or Western for having authority over the Orient and reconstructing European thinking. कहते हैं कि ये जो वर्ड ओरिएंटलिज्म या ओरिएंट यूज हुआ है मगरबी बुक्स के अंदर, ये क्लियरली इसलिए यूज हुआ है कि मगरब वाले एक आइडिया देना चाहते हैं ईस्टर्न वालों के बारे में कि किस तरह उन्होंने ईस्टर्न वालों को अपने मुताबिक जो अपनाया, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया, उनके आइडियाज को चेंज किया, उनके कल्चर को चेंज किया एटसेट्रा। इस क्लियर बेटा? वो हर एक को, अब irrespective of the individual talent or the national talent of the people who are living on this eastern side of the world, they used to refer to all of them as semi-orient or orientalist etc. इस क्लियर? उन्होंने एक ही ब्रश से एक ही तरीके से सबको पेंट किया बेटा। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, let me give you the summary. Number one, we studied about the definition of postcolonialism. After that, we studied about mimicry. After that, we studied about hybridity, and now we are studying about Orientalism. Edward Sir ने Orientalism का concept दिया। In other words, दूसरे अल्फाज में, it is the concept for dominating, ये एक तस्वर है dominate करने के लिए, काबज़ करने के, किसी को अपने मतहत करने के लिए,
मैनिपुलेट उनका इस्तेमाल करने के लिए, एक्सप्लॉइटिंग, मैनिपुलेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स होते हैं। द ओरिएंट मशरकी लोगों का, एन interestedness in Orient world recorded in so many Western texts. मशरकी लोगों के अंदर एक दिलचस्पी का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा मगरबी जो टेक्स्ट है, जो तहरीरें हैं, उनके अंदर इसको नोट किया गया। इसके लिए बेटा टू एवरीबॉडी, ओके, really wish you all the best. Let's go to the next one. यूनिवर्सलिज्म और यूनिवर्सैलिटी, ये आजकल जो हम कहते हैं आलमी बरादरी, ये वर्ड यूज किया जाता है आलमी बरादरी, और हम देखते हैं कि आलमी बरादरी से क्या मुराद है। आलमी बरादरी से बेटा मुराद है जो बड़े बड़े मुल्क है पाक, जो दुनिया के अंदर, सॉरी, like we have the major countries, among them the number one America, the British, or the UK, and then we have the Russia, the China, the Germans, the French, etc. These are actually the major words of the world, major countries of the world. So when we are saying that international आलमी बरादरी जिसको कहते हैं हम, या इंटरनेशनल हम कहते हैं जो लोग हैं, हम इनको रेफर कर रहे होते हैं कि उनको जो है वो वर्किंग करनी चाहिए। सेम इज द केस with postcolonialism. We talk about universalism or universality, alamgiriyat. Universalism is a Eurocentric view that claims their civilization is inexperiences and values are the standard for all humanity. कहते जब हम आलमगीर होने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इससे मुराद है यूरोप के लोग और उनका कल्चर, और ये तस्वर लिया जाता है बेटा कि उनका कल्चर अपने तजर्बात और अपनी अकदार के लिहाज से पूरी दुनिया से बेहतर है। इसके लिए आई एम सॉरी, इन लिटरेचर में वी आर ऑफन टोल्ड दैट व्हाट मेक्स शेक्सपियर ग्रेट इज हिज एबिलिटी टू रिवील समथिंग ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन। हमें बताया जाता है कि शेक्सपियर को बेटा बेहतरीन इसलिए माना जाता है कि वो अपनी उस काबिलियत की वजह से था बेहतरीन कि जिससे वो इंसानों के अंदर एक यूनिवर्सल ऐसी खूबी पकड़ लेता था जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। Reveal something of the universal human condition. Universalism gives assumption that European equals universals. यूनिवर्सलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद हमें ये हमारे ज़हन में ख्याल आता है कि यूरोप जो है उसका इससे जो है वो मुराद ली जा रही, दे आर एक्चुअली इक्वल टू यूनिवर्सलिज्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव as an Easterns here that the Europeans they don't have actually. या उनके पास वो चीज़ है but in a different way, and our is better than theirs, but actually might is always right. जिसकी लाठी उसकी बात, तो जो ताकतवर होता है लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं। It's clear to everybody. Here we go to the next one. It is the way of European to elevate their status. ये यूरोपियन का ही तरीकाकार है कि अपने उस मुकाम को बढ़ाएं। वो ऐसे वर्ड्स और टर्म्स यूज करते हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है यूनिवर्सलिज्म रिजेक्टेड बाय पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यही वजह है कि ये जो कॉन्सेप्ट था आलमगीर होने का, ये पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर थे उन्होंने, जो राइटर्स थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं है, दिस इज एक्चुअली नॉट यूनिवर्सल concept, or these are not the universal concepts that you are preaching. These are your concepts. These are Western concepts, or European concepts actually. These are not for us or for all the people of the world. इसके लिए ये बेटा इसमें टर्म है यूनिवर्सलिज्म इज द स्ट्रेटजी ऑफ इंपीरियलिज्म। ये उनका एक तरीकाकार था, एंड कॉलोनियलिज्म का, बाय सेइंग the universal features of humanity are the characteristics of those who occupy positions of political dominance, in this case European or Western. तो वर्ड यूज करके यूनिवर्सलिज्म और यूनिवर्सल, तो वो फीचर्स यूज करते थे उसके लिए, यानी रेफर उन फीचर्स और खसूसियात को करते थे जो कि उनकी होते थे अपने, लेकिन वो फीचर ये यूज करते थे कि ये अच्छा तरीका है और ये एक आलम पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, आप क्यों जो है वो पसमानदगी की तरफ जा रहे, पीछे जा रहे, लाइक वी आर हैविंग टुडे। सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, और जो बंदा जो है अपनी ज़हनी सुकून के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही कर, दूसरे उसके ऊपर मजाक उड़ा, अच्छा टिकटॉक का अकाउंट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते, स्ट्रेंज। यानी ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मगरब वाले लेके आते हैं जब वो चीज़ों को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। इसके लिए बेटा तो अपनी बात है। वी गो टू द नेक्स्ट वन। इसमें अब ये जितने कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन आ रही है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आ रही है, सम टाइम आल्सो कमिंग द नेम ऑफ द थियरिस्ट और द पीपल हु आर द एडवोकेट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। इट्स क्लियर। वी गो टू द नेक्स्ट वन।
पोस्ट कॉलोनियल इज सिनोनिम विद पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये जो है वो मिलता जुलता है पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद का बात। आर द इरा आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन द कॉलोनियलिस्ट्स हैड लेफ्ट द कंट्री, या वो दौर जिस जिस जो हमारा आया जब हमारे ऊपर जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो इधर से चले गए, जैसे ब्रिटिश वो चले गए ना 1947 के बाद का जो दौर है हमारे एरिया में, हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में। However, ताहम their concepts still remain and their practices are still used up to now। ताहम वो तो चले गए, बट उनके जो तस्वुरात है बेटा आज भी बाकी हैं। उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, जो तरीकाकार थे, वो आज भी अप्लाई किए जाते हैं। इसके लिए आज भी डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट है जो पाया जाता है, ना सिर्फ बड़े लेवल पे बल्कि छोटे लेवल पे भी, कि लोगों को तकसीम करें और उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल करें, उनके ऊपर कब्जा करें। इस क्लियर बेटा, ये डिटेल में आएगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। Here we go to the next one. The concept of ruling class is significant in colonialism। colonialism के अंदर बेटा एक तस्वर है कि कुछ लोग वो होने चाहिए जो हुकूमत करें, और कुछ वो होने चाहिए जिनके ऊपर हुकूमत की जाए। सेम इज द केस वी हैव टुडे इन आवर वर्ल्ड। आज भी वही दौर है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डेमोक्रेसी। The word democracy actually is coming not from eastern side. It's not a part of our eastern culture because we didn't have democracy here in our area. Before we have kingdoms here, we have so many Muslim kings here. We have this whole range of the people of the the Mughal Empire, and then the Khilji Empire, and then we have Tughlaqs and so many. And after Mughal, then there came the British actually. But before that, there were so many empires, and even before Muhammad bin Qasim coming to this part of the world in 712. Before that, there were many Hindu empires, Hindu emperors here, and some emperors from other religions. But there was never a concept of democracy in this part of the world. It only came with the colonizers. But they've left physically, but the concept is still here. And we are the one who are actually giving still water to this concept. It's still alive and we are following this one. आज भी वो जिंदा और democracy को हम चल पे. And उनके पास कहाँ से आया? They got this concept from the big Babaji philosopher, Aristotle. ये Aristotle का बेटा concept है. This is coming from his book that is called Politique. Politique is his book, and the word democracy is coming from Democrita. That means the way of government in a particular city or in a particular area. तो ये वो तो चले गए, but still we have their concepts with us. As we see today in our community, for it is a fact that concept still exists. ये हकीकत है कि जो तस्वुरात है वो आज भी मौजूद है. There are gaps between the rich and the poor. आज भी एक बेटा गैप मौजूद है, अमीर और गरीब के दरमियान में एक फ़र्क है. जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर, कुछ लोग अपने आप को बड़ा ही बरतर समझते हैं, कुछ लोगों को दूसरों को वो कमतर समझते हैं. The lord and the servants, मालिक और मुलाजिम के दरमियान, the aristocrat and the commoner, एक जो अरिस्टोक्रेट है, अफसर शाही जिसको ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं, उनके दरमियान और जो आम लोग हैं उनके दरमियान. और दी हेजिमनी एंड सबऑल्टर्न, या एक तसल्लुत है लोगों का उनके ऊपर जो कि सबऑल्टर्न है, जिनको अंदर से ही साइकोलॉजिकली बेटा बदल दिया गया है. They are two contradict aspects to play the roles as the colonizers and colonized, just like in the colonial era. ये बिल्कुल ऐसा ही बेटा रोल है जैसा कि colonial era में होता था. जो बोलेगा उसको पकड़ के ले जाएंगे, जो पॉलिसीज के खिलाफ जाएगा उसको, वो जो ताकत का इस्तेमाल था वो आज भी जारी हो सारी है, इन वन फॉर्म आर दी अदर. तो कहते हैं कि वो लोग तो चले गए, बट दिस थिंग्स आर स्टिल कंटिन्यू. दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ colonialism एक्चुअली. और यही वो वजह है बेटा हम colonialism को स्टडी करते, सो दैट वी कम टू नो व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट द रियलिटी. हम देखते हैं कि हमारे जो राइटर्स जो लिख रहे हैं उसमें हकीकत क्या है और उसमें किस चीज़ के ऊपर हकीकत नहीं है. देखिए, अगर आप अल्लामा इकबाल की शायरी देखेंगे या उनकी तहरीरें देखेंगे, दैट वुड बी टोटली डिफरेंट. और अगर हम कोई उनके बाद वाले जो पाकिस्तान के अब मौजूदा राइटर्स हैं उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल की तहरीरों के अंदर आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म का असर नहीं नज़र आता, और जो आज की तहरीरें हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी. इसके लिए तो ये पूरी स्टडी का मकसद यही होता है कि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ें बेटा असल है और कौन सी जो है वो रंग करके असल बनाई हुई है. इसके लिए here we go to the next slide.
Methods of analysis. How do we study the various types of post-colonial literature? But actually, this is not a part of our syllabus. ये हमारे syllabus में नहीं है. हम इसको stop करेंगे इधर ही. Okay, and we will then start the another one, the different theorists of post-colonial era. इसके मुख्तलिफ जो theorists हैं उनको हम देखें. Okay. So with this, we have come to the end of our post-colonial lecture, and thank you all the people who watched our lecture online. Thank you so much.